Hi friends, welcome to the lecture on the pests of the soybean and their management. Okay, so soybean जो है it is the one of the major pulse crop that's sown in India, and the crop is basically attacked by a number of insects as well as some non-insect pests. So far more than like 300 pest species they they have been recorded on this soybean crop, so of which few of them they are causing like serious damages or economic damages. It include like stem fly. You can see in the मतलब जो यहाँ पर डिवाइडेशन हुआ है, स्टेम फ्लाई and leaf miner, leaf defoliators like the tobacco caterpillar and semi-loopers. And so in the today's video, let me understand this pest in the details, and like particularly on the host range, identification, the characteristic and biology, and some nature of the damage and damaging symptoms, and last one is the management practices. So as you see in the picture, first pest is the, we will start first with the stem fly. Okay, the scientific name is the you can see Melanogromyza soji या सोजी, ठीक. एंड इसकी इसका जो बेसिकली इट बिलोंग टू द फैमिली एग्रोमाइजिडी एंड ऑर्डर इज डिप्टेरा. So it occur in the early stage of the crop, that is when the crop is about 15 to 20 day old. So this is basically damage the crop in the early stages, thereby it affect the establishment of the crop also. Besides soybean, it is also attack other pulses like where it act as a like minor pest. Now coming to the adult identification. First you see the diagram. For the adult identification, basically adult जो है is a very small and like shining black colored fly. So adult female they lays eggs on the like unitrifoliate leaves, and maggot is a जो maggot है it is a pale yellow in a color, as you see in the picture pale yellow color का है. Okay, and pupation occur inside the stem at the lateral boros. So this is the some other identification marks है larva, pupa and adult के. Now then coming to the nature of the damage. So basically maggot is the damaging stage for this particular insect. It enters into the stem through the petiole and feeds within by making like tunnels downwards and causing like partial drying and dropping of the leaves. So followed by the complete drying on and also dropping of the plants. And if you split open the affected stem, so you can see the distinct tunnels with lots of frost material and amenterous particularly pupa and maggots. As you see, maggot enter into the stem through the petiole and feed within by making tunnel downward. So you can see in the pictures. Now this is the partial drying जो मैंने बताया. Okay, so coming to the management as a preventive measure, so go for early sowing to escape from the incidence of this pest, and as a curative measures you can collection and destruction of the affected plants, so thereby you can reduce the further multiplication of this pest. Then spray azadirachtin at the rate 2 ml per liter of water. As a last option, you can spray newer insecticide molecules like the thiamethanzum at the rate 0.3 gram per liter of water, or you can use imidacloroprid at the rate 0.3 ml per liter of the water. So this is the control measures. Now second one is the leaf miner. Okay, another major pest on the soybean is leaf miner. This is that is the
एप्रो एरियमा मॉडिसेला, ठीक है, मे भी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है पर आप लोग ध्यान रखिएगा, एप्रो एरियमा मॉडिसेला. इट बिलोंग टू द फैमिली जेलिचिडी ऑफ द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा. बेसिकली इट अकर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द क्रॉप एंड बिसाइड्स सोयाबीन इट ऑल्सो अटैक ऑन अ ग्राउंडनट, रेड ग्राम एसेट्रास. Adult is a very small, okay, and dark brown to grayish brown colored moth with some white spots on the front wings जो रहते हैं उनमें. So here adult female they lays egg on the leaves and on a hatching neonate larva mines into the epidermis of the some leaf tissues, and also you can see they feed on the feed within the. सो हियर फर्स्ट टू जो इंस्टार रहते हैं प्यूपा के, द रिमेन इन द माइंस एंड दे एक्ट एज अ लीफ माइनर, दैट्स वाई नोन एज अ लीफ माइनर. देन द थर्ड इंस्टार ऑफ लार्वा जो रहता है, दे कम्स आउट फ्रॉम द माइंस एंड दे वेब अबाउट 2 to 3 लीव्स टुगेदर एंड नाउ दे फीड विद इन बाय लाइक स्क्रैपिंग द क्लोरोफिल कंटेंट ऑफ द लीव्स. So because of this chlorophyll contain scrapping, as a result of which mines is formed in the leaves, so this is known as the leaf miner insects. Now further webbing can also be seen on the plant. Under severe infestation cases, what happen, whole plant look like burned up appearance, and lastly ultimately yield will be reduced because of this attack. You can see this is the some damage symptom. Now we coming on the management. As a preventive measure, go for the early and synchronized sowing, and then go for the rotation with the some non-leguminous crop, because soybean is a leguminous crop. As a curative measure, spray NSK at the rate 5% or use commercial neem products that containing azadirachtin at the rate 2 ml per liter of water. सेम है, ठीक है, मोस्टली. एज अ लास्ट ऑप्शन यू कैन स्प्रे अदर स्पिनोसेड और फ्लूबेंडामाइड और लैम्डा साइलोथ्रीन जो है एज द रिकमेंडेड डोज, ठीक है. तो इसमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं. लैम्डा साइहेलोथ्रीन यूज़ कर सकते हैं, फ्लूबेंडियामाइड जो है वो यूज़ कर सकते हैं, या फ्लूबेंडामाइड यूज़ कर सकते हैं. एंड इसके अलावा आप स्पेनोसेड भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर्मुलेशन एंड डोजेज यहाँ पर मेंशन किया गया है. नाउ अनदर वन इज़ द, हम देख लेते हैं टोबैको कैटरपिलर, ठीक है. सो दिस इज़ द टोबैको कैटरपिलर दैट इट इज़ अ स्पोडोपटेरा ल्यूटेरा, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं स्पोडोपटेरा ल्यूटेरा भी बोल सकते हैं. एंड दिस बिलोंग टू द फैमिली नॉक्टिडिडी ऑफ द ऑर्डर लैपिडोप्टेरा. बेसिकली लैपिडोप्टेरा के ऑर्डर ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं. सो इट इज़ अ पॉलीफेगस पेस्ट, मतलब सोयाबीन के अलावा और भी बहुत सारे क्रॉप्स को अटैक करता है. सो इट इज़ नोन एज द पॉलीफेगस. एडल्ट जो है, इट इज़ अ मीडियम साइज मॉथ एंड फोर विंग्स दे आर डार्क ब्राउन टू ग्रेइश ब्राउन इन अ कलर विद वाइट लाइक पैटर्न, ठीक है. यू कैन सी अडल्ट मॉथ को. नाउ द जो हाइंड विंग्स रहते हैं, दे आर डल वाइट इन अ कलर. सो हियर एडल्ट फीमेल लेज एग ऑन द लीव्स इन अ ग्रुप, एंड दिस एग्स जो रहते हैं, दे आर कवर्ड विद द ब्राउन हेयर्स. And early instar they usually dark green in a color with black spot on the other side of the first abdominal segment. Now grown up larva जो रहता है, they having crescent shaped या crescent shaped marking with yellow or orange longitudinal lines on the body, and the pupation occur in the soil, ठीक है. तो दिस इज़ द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लार्वा, अडल्ट एंड एग एंड प्यूपा. नाउ देन
coming to the nature of damage, so you can see larva is the damaging stage for this insects. Neonate larva और early instar larva जो रहता है, they feed gregariously by scraping the green tissue from the lower surface of the leaves. As the larvae grow, like they spread to the entire field and they feed like whole plant, ठीक है, whole leaves, and they sometimes larvae feed on the pods also, as a result of which skeletal leaves can be seen on the plants. Even symmetric holes can be also seen on the plant or particularly on the leaves. So under the severe infestation cases, what happen, defoliation of the plant occur because they scrap the chlorophyll content, and on the plant you can see the regular holes. Now ultimately the yield gets reduced because of the damage. You can see hole. Now some management practices. So monitoring a set of the sex pheromones trap at the rate 2 to 3 trap per acre के हिसाब से, and as a preventive measure go for the deep summer plugging to expose the pupa to the hot sunlight or to the insectivorous birds, and as a curative measures collect the egg masses as well as the early instar since they are in a group and destroy them, and thereby you can reduce the further multiplication of the pest also. Then like spray any one of the biopesticide, either the you can use the meta, ठीक है, राइजीबियम रियली और बिवेरिया बेसियाना और जो भी बीटी प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. इसके जो है फॉर्मूलेशन और जो रेट है वो यहाँ पर दिया गया है, 2 ग्राम पर लीटर, मोस्टली 2 ग्राम पर लीटर है. और यू कैन स्प्रे द इमामेक्टिन बेंजोएट, ठीक है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए. तो दिस इज़ द सम जो इंसेक्टिसाइड एंड बायो इंसेक्टिसाइड है, बायो जो पेस्टिसाइड है वो यूज़ आप कर सकते हैं. सो दिस इज़ सम कंट्रोल मेजर फॉर द टोबैको कैटरपिलर. सो आज की वीडियो में हम इतना डिस्कस करेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी लंबा वीडियो. सो नेक्स्ट वीडियो में फिर जो बच्चे जो इंसेक्ट्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे और